Hello everyone, hi and good afternoon. I welcome you all to the platform of Sri Chaitanya. So I believe your preparation are going very well and fantastically going on. Okay, so people, हम लोगों ने जो पिछला सेशन लिया था वो ग्रेड 11 के जितने भी फॉर्मूलाज हो सकते थे पॉसिबल, ठीक है। और मैंने कोशिश की थी कि जो वेरिएशंस होती है, जैसे क्वेश्चंस में हम लोग जब वेरिएशंस देखते हैं तो आप लोग कहीं पे भी मिस्टेक ना करते हो, तो कुछ वेरिएशंस की भी बातें की थी हम लोगों ने। जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के ऊपर बात की थी हम लोगों ने, जब जो स्प्लिटिंग करते हैं हम आपके वर्क डन्स को, या फिर आपके फ्रिक्शंस के क्वेश्चंस को, या फिर आपके इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को, या फिर डीएलएमबेट्स के प्रिंसिपल को, जितने भी पॉसिबल वेज में ब्रेक किया जा सकता था वो सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने कल बात की थी। आज का जो सेशन होने वाला है वो ग्रेड 12 के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेड 12 में एज यू पीपल नो कि जो चीजें हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक ज्यादा वेरी नहीं करती, ठीक है। गुड आफ्टरनून। बहुत हद तक ज्यादा वेरी नहीं करती। इनमें जो चीजें हैं दे आर फिक्स्ड, ठीक है, बहुत हद तक फिक्स। और आपको जो है सो as you people know कि in this particular thing, okay, so in when we talk about the grade 12, so maximum of the things are very much fixed, okay. The variation of the questions are very little, okay. Why? Because as we people know कि there are the fixed formula for the finding out the electric field, finding out the forces, finding out the motional EMF, okay, finding out the values of the image formations, as well as the whether it is mirror, whether it is lenses, okay. So every single thing in respect to the grade 11, the grade 12 syllabus is, or the variation of the questions are more about fix only. Okay, it is more than what you can say. It is 90% fixed, 10% variation is there, okay, with respect to the grade 11. So we will be moving forward with this particular formula sheet. We will be trying to understand about this particular formulas, that what are the formulas of. So the very first chapter that we normally do is electrostatics, in which the entire chapter is divided into two. First, we talk about electric field, we talk about the electrostatic. Then we talk about the electric field. After that, we'll talk about that capacitance. Okay, capacitance, the variation of the question of the capacitance. Okay, so we will be doing accordingly. Let us start, everyone. So these are the, I believe you are able to see the screen. Okay, so these are the physical constant that we use throughout grade 11 and grade 12. Fine. Now we'll start with the electrostatic chapter, everyone. So we know about the Coulomb's law. What is Coulomb's law? So basically, in Coulomb's law, we will be trying to find out the force by which the two charges are getting influenced. Okay, whether it is repulsion, whether it is attraction, what is the influence of the force that is there between the two charges? We'll talk about that. So what is Coulomb's law? That is F equals to K Q1 Q2 by R square, where K equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, what is epsilon naught? That is permittivity constant in vacuum. Whether we talk about vacuum, whether we talk about air, because if you talk about the variation between the E naught, epsilon naught of an air or of a vacuum, it is very slightly less. Okay, so if we talk about the air, getting my point, if we talk about epsilon naught of the free space, that is the vacuum, it is taken as going to be E1. And if we talk about epsilon naught of the air, it is taken as what? It is going to be yes, it is going to be, sorry, we are talking about dielectric constant. I'm extremely sorry, people. Okay, so when we talk about dielectric constant, okay, or you can say the epsilon relativity of the air, we can talk about that is going to be 1. Okay, and for the different mediums, whether we talk about air, whether we talk about vacuum, there the variation is very less. Got my point? So when we talk about the Coulomb's law, we know what to have to do. After that, we'll talk about the electric field, everyone. So in the electric field, we know the formula. What is the formula is? So when we talk about the electric field is equals to F, that is electrostatics force, divided by the charge, the unit test charge. That is what it is there. Okay, either you can write Q or you can write Q naught. This entire electric field entirely change the value of the force that we know, that is 1 by 4 pi epsilon naught. Multiplication of the two charges Q1, Q2, or you can say Q naught divided by R square, and it will be here, you can say the Q naught will be there, the Q naught is cancelled out. So we are getting electric field will be equals to, that is K
Q divided by R square basically. So either you can go with this formula or you can go with this formula. It totally depends how the question is given to you. Okay, if the forces are given to you, the test charge quantity is given to you, you can go with the first one. If it is not given, if it is a question of equilibrium in sense like suppose that here it is a 0.2q charge is there, here is negative 2q charge is there, and the distance between them is what? That is going to be, let us suppose it is going to be 20 centimeter. Okay, so we all people know that at the mid of it only the electric field of 1 will be equals to electric field of 2, or you can say the net electric field will be equals to 0. We all know this, getting my point. So how to find out this particular values? What is the value of x? So what should be the value of from here to here? Okay, that is what it is there. Fine. So it totally depends how to solve this particular type of questions. I hope you remember this type of question. This is one of the important and basic standard question that we generally follow in this particular chapter. After that, we'll talk about electrostatic energy. So electrostatic energy, in electrostatic energy, the formula is little bit changes. Instead of writing R square, we write only R. Okay, so we are not going very detailed into this because because we know the basic understanding why the formation of the formulas are like that. After moving this, we talk about the electrostatics potential. Okay, so electrostatic potential, it will be the same everyone. Okay, that is the electrostatic potential happens due to the 1 point charge. Okay, it can be of 1 point charge divided by the R. So K Q by R. Got my point? And if you want to find out the variation of it, so we have to integrate, okay, between the limits, and we will be moving forward. After that, we'll talk about the electric dipole moment. You know what is electric dipole moment is. I believe you know what is dipole is. Okay, two equal and opposite charges which are kept about a distance apart, smaller distance apart. That is called what is. Then we talk about the potential of the dipole. After that, the field of the dipole. So these are the basic formulas that we talk about when we are talking about the electrostatics, everyone. Got my point? After that, we'll move forward with the Gauss law. We'll try to understand about the Gauss. It is not a Gauss law. It is basically it is a Gauss theorem which helps in proving the entire Coulomb's law basically. Got my point? So in that, there is one very famous question that is there. We generally practice about this, that ring question. When the charges are distributed equally over the ring, then we have to find out the electric field at a particular point, which is x distance apart or a distance apart according to the books. Okay, so we'll talk about that also. So I believe you remember this formula, how it is going on. Okay, so 1 by 4 pi epsilon naught. This is how it will be going on. Hai qx divided by a square plus x square 3 by 2. Fine, to the power 3 by 2. And I believe you people are also able to understand about the graphs, everyone, because the graphs are also very much important. If you people have understood the graph, then it is very good. Okay, and if you people are having the understanding how the graph has been made, or if there is a particular equation of question it is given to you and you are able to solve, if you are able to solve that particular question with the help of the graph, then it is fantastically good. Okay, because there might be some of the questions that will be presented in the form of a graph. Okay, so you should have the caliber to solve it down. Then obviously the derivation part of the linear charge density, or you can say surface charge density, or you can say the volume charge density won't be there. Okay, but I believe you are having the idea about the few of the figures by which the standard values that you remember. Okay, about the shell, about the circle, about the cylinder and all. Okay, fine. This is what it is there. After that, I believe you people are very much aware of the basic formulas when we talk about the capacitance, or you can say about the capacitor, everyone. Okay, so capacitance C equals to Q by V, everyone. That is what it is there. This is V is the potential difference. Then we have parallel plate capacitor. So I believe you will be also able to understand when the capacitors are arranged in the parallel part, then how to find out the equivalent capacitor. If it is kept in the series part, then how to find out the equivalent capacitor. Fine. So that it is just reciprocal of the resistance. Got my point? For the capacitor, if it is in the parallel, so we will be summing it up as it is. But if it is in series, then we will be doing the reciprocal part. Okay, some multiplication upon sum.
That is what we have to do. Now, these are the certain standard formulas that we are over here. The spherical capacitor. So, what will be the formula for this? 4 pi epsilon naught R1 R2 divided by R2 minus R1. Okay, R2 is the outer cell, outer radius. R1 is the inner radius. Then we are having for the cylinder. Similarly, we will be having the value for a straight line also. Okay, so parallel. Just sum it up. For series, we have to do the division format. Fine. After that, we'll talk about the force between the parallel plate capacitor. What will be the value? F equals to Q square by 2A epsilon naught. Then we are talking about because the capacitor is the device which stores the energy. So we'll talk about the how much the energy is being stored. So the very basic formula is going to be U equals to half CV square, or you can write half QV also. These are the basic standard formulas. That is already written on the first page of the books. Okay, so I believe you will be remembering that. Energy density and the electric field, everyone. Okay, U by V, or you can say half epsilon naught E square, where E stands for the electric field. Okay, now the capacitor with the dielectric, everyone, dielectric constant. What is dielectric constant? Dielectric constant means the epsilon for the medium divided by epsilon naught for the free state. That is called as the dielectric constant, or you can say relative permittivity. Okay, that is what it is there. So I believe these much the basic things you right now remember, and you are also able to find out the basic formulas. You are able to also remember the part. Okay. After that, everyone, will talk about the current. So in the chapter of electricity, current electricity, I don't feel that much formulas are needed. Okay, because if you try to go with this, what are the formulas, what are the concept that is needed, that you should be very much good in junction law, including with the most probably you should be very, very, very good in the Kirchhoff's voltage law, everyone. Getting my point? So because maximum of the questions will be solved by that only. Moving next, what else is very much needed? You should be very much aware about the EMF. Okay, if the EMF and the internal resistance questions are being asked to you, you should know how to solve them. So these two type of questions are very much necessary. When we talk about the other part of the capacitor, the same type of questions have been asked in this also. That is called as a ladder type question, or you can say infinite series type of question. So when we talk about infinite series type of question, it has been asked by the capacitors also. It has been the resistance also. Like for an example, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, तो कुछ इस तरह के आते थे. अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, ठीक है, तो एक लेडर टाइप का क्वेश्चन आता था. दिस इज अ टाइप ऑफ अ लेडर, एवरीवन. If you remember, if you try to remember, it is kind of a ladder type of question which goes up to infinity. Okay, the same type of question, this same type of question is also been asked in the form of a capacitor too. Okay, like for an example, like this capacitor will be there. So I believe you are having the idea to how to solve this type of question. मुझे ऐसा भरोसा है कि इतने क्योंकि आप लोगों ने पूरी प्रैक्टिस की है, तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि इन तरह के सवालों को किस तरह से बनाया जाता है. ठीक है, तब भी मैं एक बार बता देता हूं कि आपको किस तरह से ये बनाया जाता है क्वेश्चन को. तो अगर ये इनफाइनाइट तक है, जिसको हम लेडर क्वेश्चन भी बोलते हैं या इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चन भी बोलते हैं, तो इसको कैसे बनाया जाता है वो भी आप देख लो एक बार. इसको बनाने के लिए क्या है कि मान लेते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी R1, ठीक है, दिस इज R2, दिस इज R3. मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, ठीक है, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3. तो देखो होता क्या है इसमें कि हमें जैसे ये हम ऐसा इसमें इस लेटर टाइप में भले आपका रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हो या फिर कैपेसिटर का क्वेश्चन हो, हम वो सेक्शन को देखते हैं जहां से ये रिपीट होना शुरू हो रहा है. Getting my point? We are trying to see that particular section from where it is trying to repeat itself. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, कि इस पोजीशन से अब इसके बाद से ये पूरी रिपीट हो रही है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के, इस पूरे चीज को हटा के, हम इस पूरे चीज को हटा के अब हम क्या बनेंगे कि हम फिर से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे. ठीक है, विल ट्राई टू रीड्रॉ द इंटायर रेजिस्टेंस वन मोर टाइम, है ना. आप ड्रॉ करने के बाद, अब ड्रॉ करने के बाद
वो पूरा जो इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन था उसके जगह पे हम एक आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डाल देंगे जिसको हम लोगों ने नाम रख दिया x, ठीक है। ये सेम चीज आप कैपेसिटर में भी करोगे, ठीक है। आपको वो सेक्शन पता करनी पड़ेगी जहां से ये कैपेसिटर का जो पार्ट है वो ये हो रहा था, ठीक है। तो जहां पे ये कैपेसिटर क्या है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है इसके आगे वाले के लिए, तो उसको भी x मान लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी C1, दिस इज C2, दिस इज C3। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट कि अगर ठीक है सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है, तो फिर किस तरह से इसको क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो वैल्यू क्या होगी x की। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो प्लीज थोड़ा सा आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद एक तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, कैसे बता दिया कि अगर आपको याद हो, ठीक है, इफ यू ट्राई टू रिमेंबर, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, ठीक है, हम लोग जैसे इक्विलिब्रियम्स के क्वेश्चंस होते थे कि ठीक है भाई, एक देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक आपका नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगी Q2, ठीक है, तो मुझे अगर इन दोनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखना, इफ आई वांट टू पुट दिस इंटायर चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो मैं एक टेस्ट चार्ज को कहां रख दूं कि ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये है चार्जेस का क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन होगा कि मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है, ये दूसरी चार्ज है, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होती है तो अगर इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस को एक जगह पे न्यूट्रल करना है, जिसे हम नल पॉइंट भी बोलते हैं, मतलब दो चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इन केसेस में ये भी आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको वो x की वैल्यू पता करनी पड़ती है, वो डिस्टेंस का वैल्यू पता करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट इज देयर, फाइन, ठीक। तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे? सुपरपोजिशन इक्वेशन बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन ये क्वेश्चंस उसी से ही आते हैं। द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सुपरपोजिशन थ्योरम्स आर वेरी बेसिक बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली। Got my point? But you should be very much mindful while solving that part. Got it? Okay, so why you are going to be mindful? Like for an example, suppose that this is a square where this is one of the charges which is given over here. Okay, one of the charges which is given over here. If I ask you to tell me what will be the charges, what will be the net charge at this particular center, okay, now your answer will be 0. Ki sir, the net charge, or you can say the net force will be equals to 0. The answer is correct. There is no problem in that. But if I change the value from plus q to 2q, now the answer is not going to be net is equals to 0. So please kindly be mindful while solving the answers. Got my point? Now here the value will be changed. It is not going to be equal and opposite. Obviously that there will be one q charge which will be showing over this side. Okay, so you have to take that into account. So do not get rush and just write down 0. Fine. This is one of the questions. The next type of question is what? Like for an example, like this is the, suppose that this is same, we are talking about the square. In previous year, there was a hexagon which is made. So a plus q charge is there. Suppose that this is also a plus q charge, this is also a plus q charge, this is also a plus q charge. Got my point? So suppose that we have to find out the F net over here. So this will be showing this side, F1, F2. Got my point? And this will be showing over here. That will be the F3. Got it? So normally what people see, when the moment when you are in the examination, these are the basic things that you will be able to forget. कि आप लोग ये भूल जाओगे कि ये F3 है और आप इसको F net मान के फिर आगे बढ़ जाओगे. You will be giving the answer accordingly. ठीक है? So that is not going to be happen. ऐसा ना हो, इसीलिए please be mindful when you are solving the question कि ये F net नहीं है. This is not the F net. Yes, F net will be over this. It will be 45 degree from here. Okay, but you have to solve for the F net. Got my point? So please be mindful while solving this type of questions. After that, everyone, we talk about when we talk about the electricity wala part, है ना? So electricity wala part is totally done. Fine. Please be very much careful while solving the EMF questions, internal resistance question. Okay. So please be mindful. I believe you will be very much aware of the internal resistance questions, everyone. Like for an example, if this is the outer resistance that is given to us, okay, and this is the EMF that is given to us, and internal resistance has been shown like this. Got my point? Let us say it is 2 volt and it is going to be 1 ohm. So for
clearing the entire confusion, what we generally do is instead of just showing that is internal resistance, हम उसको internal resistance मानते ही नहीं, हम क्या कर देते हैं, हम उसको एक और resistance मान लेते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आदत है ना हमें सॉल्व करने की, इसकी तो आदत है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस मानना ही नहीं, ठीक है। डू नॉट कंसीडर दैट एज इंटरनल रेजिस्टेंस, दीज आर द बेसिक दैट इज ऑलरेडी बीन टॉट टू यू। व्हाई आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, मैं इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे ही फंसोगे और यहां फंसना नहीं है। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन, let us move forward, है ना। Now we'll talk about the magnetic field everyone, so please be mindful while solving that directions, ठीक है। directions के लिए please be very much aware, ठीक। जहां तक बात हम मैग्नेटिक फील्ड की करते हैं, ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एवरीवन, सो वी डू हैव द वैल्यूज। क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जब भी हम लॉरेंज फोर्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, जब भी एक पॉइंट चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है तो कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आई बिलीव यू पीपल नो व्हाट इज द फॉर्मूला। द वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीन वेरी मच आस्क्ड इज दैट मोशनल ईएमएफ का जो आंसर है आपका, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू VVL, ठीक है, BVL, ओके, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी एंड द लेंथ, सो प्लीज बी रिमेंबरिंग दैट, ओके। उसके बाद जो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कैरेक्टर, जिसको हम लोग बिल भी बोलते हैं, BIL बोलते हैं, या फिर QB साइन थीटा के नाम से भी हम लोग, जो QVB साइन थीटा के नाम से भी जो जाना जाता है, तो प्लीज डू रिमेंबर दैट पार्ट ऑफ थिंग्स, ओके। सो these are the 2-3 things that is should be remember, because the normally this type of question has been asked. After that, when we talk about the magnetic field everyone, है ना, Biot-Savart law आप सबको पता है कि what is Biot-Savart law is, ठीक है। अगर मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक स्ट्रेट वायर से, ठीक है, स्ट्रेट फाइनाइट वायर से, तो एक पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती, म्यू नॉट I by 4 pi D, ठीक है। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज देयर, ओके। फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट बाय 2 pi D, है ना। पैरेलल वायर्स के बीच में अगर आपको जैसे फोर्स पता करनी है, दो वायर्स है, उसमें करंट कैरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो दो वायर्स के बीच में आपस में कौन सा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, दैट शुड आल्सो बी रिमेंबर। ये जो सबसे फेमस है कि आपके पास एक रिंग है और रिंग के दो पॉइंट्स के ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है एक पॉइंट पे मुझे पता करना है, जिसे हम एक्सियल रिंग बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी पता होनी चाहिए आपको। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट इज वेरी, दिस आर स्टैंडर्ड्स, it should be known, these are the basic standard questions or this should be known। इसमें फॉर्मूला में मैसअप मत कर देना, ठीक है, do not mess up the basic formulas on this, fine। moving next, आपको फिर when we talk about the solenoid, it is the solenoid, it is very easy part, so it is mu naught Ni, है ना, mu naught, then we have n is the n, then we are having I everyone, फिर ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। The very next very important question that we people are having is this, है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो क्वेश्चन होता है, that is also one of the important question, ठीक है। और हाँ, बाकी जो मैंने आपको बताया बिल वाला, ठीक है, वो जो मोशनल ईएमएफ की जो क्वेश्चंस होती है वो जरूर आप याद करके रखना कि एक बॉडी जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है, जब हम लोग इसको काउंट करते हैं, इसके पीछे भी हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन लिया था, आप देख सकते हो वो क्वेश्चन है उसमें, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह था कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट थी, है ना, और मुझे टाइम इक्वल्स टू टी से लेकर टाइम इज इक्वल्स टू टी तक पता करना था कि कितना था, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर पता किया था, ये स्क्वायर है, ये अंदर कर रहा है, ये पूरा लेंथ L है, ठीक है, तो हम लोगों ने वेरिएशन करवाया था, फिर हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, कि कितना अंदर जा रहा है, ये जो टाइम 0 पे यहाँ से यहाँ तक है, फिर टाइम t से लेकर आपका L/v हो जाएगा। वाई दिस इज L/v, बिकॉज ये लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई द वेलोसिटी विल बी द टाइम। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर आपको याद हो तो 4L दी हुई थी, ठीक है, तो जो नेक्स्ट जब ये पूरा बॉडी बाहर निकल जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज L/v प्लस 4L बाई v, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो दिस इज 5L/v, ठीक है। तो टाइम ऐसे वेरी करते रहेगी और आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई बिलीव ये सारी चीजें आपको याद होगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एवरीवन, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, मोशनल ईएमएफ का वैल्यू प्लीज मत भूलना, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू प्लीज मत भूलना, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है, देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, आपको एक इक्वेशन का फॉर्म दे दिया रहेगा, देयर विल बी अ फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग, ठीक है, एंड प्लीज बी वेरी माइंडफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस बिकॉज देयर विल बी ट्विस्टिंग इन द लैंग्वेज, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आपसे एनर्जी पूछ रहा हो, आप पावर निकाल के बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, मैं जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज देयर एवरीवन, है ना. Yes, after that mutual induction, everyone, you should be very much clear while the equations are being made. ठीक है, while the equation are being made, and you should be very much clear that where will be the RMS maximum point will be there. Okay, what will be the value of that? So these things are very much important, and you should be very much mindful about this. Fine. Then we talk about RC circuit. What will be the value of what is Z? What is RC circuit? What is the equation? है ना? You should also see the value of the equation, in which form it has been written. Do I have to convert that form, or that form is sufficient to solve the question? Okay, so please be mindful while reading these questions also. And these are the very basic questions, basic formula that we generally do. है ना? Step up, step down, number of turns. Okay, EMF questions are there, so this is very much needed. After that, this is one of the easiest chapter that we talk about, now reflection of light, or you can say the chapter light. It is one of the easiest chapter, including with in this particular chapter the entire concept is very much fixed. Okay, so you can solve the questions related to this particular chapter very easily. Okay, but always be mindful when you are having the questions related to the combination of the lenses. Like for an example, like this type of question will be given to you, might be, and this is going to be N1, this is going to be N2, this is going to be N3. It will be having any other value. Let us suppose it is having 3 by 2. These two are same. Let us say it is going to be 2 by 3. It is also 2 by 3, or might be changing. So how to solve this thing? So you have to find out the value of L. This is going to be, the R is infinity. Here the value of R will be given to you, maybe 20 centimeters. So you should know how to solve it. Got my point? So basically you will be finding out the focal length. Okay, that is N minus 1, 1 by R, 1 by R2. फाइन. सो ये फोकल लेंथ आप लोगों को निकालना आना चाहिए. उसके बाद नेट फोकल लेंथ निकालोगे तो आंसर निकल जाएगा. ठीक है, और मीडियम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नॉर्मली हमारा जो ये चैप्टर है, नॉर्मली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी डू नॉट गेट एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्जिनल रेस. मार्जिनल रेस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आती. ठीक है, नॉर्मली वो पैराक्सियल रेस के लिए ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता. तो जरूर आप लोग एक बार जरूर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इट हैज बीन रिटन, है ना. इफ इट इज रिटन एज मार्जिनल रे वाला क्वेश्चन है, नाउ द एंटायर कॉन्सेप्ट विल बी चेंज. ठीक है, फिर फोकल लेंथ अलग हो जाएगी, वैल्यूज अलग हो जाएंगे, वो अलग से निकलेगी. लेकिन ये आते नहीं है जनरली इन जेईई एडवांस. इट वाज आस्क्ड 1 और 2 है ना. ठीक है, तो वही है. तो प्लीज ये थोड़ा ध्यान रखना. क्वेश्चंस इजी आएंगे इस चैप्टर में, ज्यादा वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन नहीं आते हैं. सिली मिस्टेक मत कर देना. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर, है ना. apparent death, critical formula. If you people are having the issue with the critical angle, please do remember sin C. You can say critical angle will be equal to refractive index of rarer medium divided by refractive index of denser medium. Simplest formula it is. Got my point? Then people are having the deviation of the prism, the converging power. Okay, so these are the things that should be very much, the combination of lenses, the combination of the powers. Okay, we have to find out the value of P net. So these are the few type of questions that should be very much be there. And then we talk about the what do you say, lens maker formula. These are very much needed. You should be very much aware of this. Fine, that is what it is. That chalo, let us move forward. After that, simple microscope. Then we have the compound microscope, the values, the variation, and every single thing, है ना. Power also. Yes, mean deviation, angular deviation. This type of question are very rare, but it may ask to you. Okay, so please do remember these formulas also. After that, light waves. Okay, most probably the questions related to your young YDL. Okay.
Young's double slit experiment, YDSL. Okay, so please do remember constructive, destructive, what is the values, okay, how the angle is changing, what is the equation of it, basically. Fine. The maxima as well as the minima also, the laws of moles. The next, these are the chapters which are very easy, but their formulas are little bit trickier. Okay, these chapters are easy, but the formula is little bit trickier. So what I will be requesting is ki try to revise the formula for the chapter called as the modern physics. Okay, the photoelectric effect, the atoms, the nuclei. Okay, going with the semiconductors also. Normally in the semiconductor, there are two types of questions that will be the asked. The first type of question that is going to be for the gates. Okay, there will be question related to the gates, and there will be question related to the Zener diode. Zener diode. Okay, so please be mindful while solving this particular questions. Okay, and yes, this is how it will be. Fine. Please do not expect much complex formulas questions. Okay, it will be straightforward. But what I will be requesting is, because in the previous trend we have found out that there are the questions which are related to these two types of questions only when we talk about the semiconductor part. ठीक है, जेनर डायोड और आपका जो है जेनर डायोड से मैक्सिमम आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके मतलब 80% क्वेश्चन आपके रहेंगे गेट से, बाकी 20% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके जेनर डायोड से रहते हैं. बस इसी तरह से अगर इतना कर पाओगे आप तो काफी है. ठीक है, so this will be the all everyone. I believe I have covered all the variations, all the variation of the questions and every single thing. ठीक है, so please do remember. ओके, दीज जो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हो सकता है कि ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे ना लिखा हुआ हो, आपके फॉर्मूलाज ऐसे लिखे हुए हो जो आपको पता हो कि कैसे काम कर रहा है वो. ठीक है, सो वट एवर दैट यू हैव रोट इट, प्लीज गो विद दैट ओनली. ट्राई टू रिवाइज द फॉर्मूला. कुछ नए पढ़ने की अब जरूरत नहीं है. ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ. ठीक है, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 2 days रिमेनिंग. सो कुछ नया नहीं पढ़ना. प्रैक्टिस कर लो. मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट दे लो. ठीक है, फॉर्मूला रिवाइज कर लो. मैक्सिमम आपका टाइम फॉर्मूला रिवाइज करने में, मॉक टेस्ट देने में और आपका जो है क्वेश्चन सॉल्विंग में ही जाना चाहिए. कोई भी नया चैप्टर आप प्लीज मत पढ़ना. जो हो चुका सो हो चुका. ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा दिया है तो अच्छी बात है. अगर आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, किसी चीज को और करने की, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वन मोर टाइम. आप एक बार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार और सॉल्व कर सकते हो, जिसमें 2000 वो जो आपका सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था ना, वो देखो वो कभी कभी आता है. ठीक है, और उस क्वेश्चन को छोड़ के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था अगर आपने मेहनत की होती. ठीक है, अगर स्टूडेंट से मेहनत की होती जो बनता नहीं. ठीक है, सारे क्वेश्चन बनने लायक थे. एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकियर थे, आपको वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, खासकर वो जो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था वो. ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना ही होता है. ठीक है, तो उसमें अब दिल मत लगा लेना कि नहीं बन क्यों नहीं रहा है, मेरे को फिजिक्स आती मैं बना के दिखाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को छोड़ना ही होता. अगर नहीं समझ में आ रहा लेफ्ट इट, मूव अगेन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ठीक है, चलो. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एवरीवन. ठीक है, एक और सेशन हम लेंगे. ठीक है, एक और सेशन आएगी जिसमें आइदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द top 40-45 क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन. ठीक है, और वही क्वेश्चन आएगा ये नहीं बोल रहा, उस तरह के, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस जो है आप जनरली करते भी हो और उस तरह के क्वेश्चंस किए भी जाएंगे. तो टॉप 45 क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं आपके 11 और 12 को मिला के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में. तब के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. सी यू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड all the best for your exams. Okay, see you all. Thank you.